मकामी होटल में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पेन मेडिसिन की जानिब से वर्ल्ड पेन एंड रीजन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की समेत गैर मुल्की डॉक्टर्स ने दर्द की वजूहात और उनके जदीद तरीका इलाज पर अपने तजुर्बात से लोगों को आगाह किया। मकामी होटल में मुनक्दा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पेन मेडिसिन की जानिब से वर्ल्ड पेन एंड रीजन कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से डॉक्टर एंड्रिया टेस्कॉट, बरतानिया से डॉक्टर रुबीना अहमद, तुर्की से डॉक्टर टिंच कोच और रोमानिया से डॉक्टर ओविडियो पालियो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहजाद अनवर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस पहली बार लाहौर मुनक्कद की जा रही है, जिसका मकसद दर्द की वजूहात और उसके बेहतर इलाज पर तरबियत फ्राहम करना है। जहाँ तक ये कॉन्फ्रेंस है, ये लाहौर में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मेडिकल की हिस्ट्री में जो इंटरवेंशनल पेन या जो जोड़ों के दर्द है या कमर का दर्द है या कैंसर का दर्द है उस मौजू पर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी फॉर इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन जो है गुज़श्ता 4 साल से पेन के शोबे में पाकिस्तान में इस तरह से काम कर रही है कि हम डिफरेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, सिम्पोजियम, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं यंग डॉक्टर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, ताकि हम एक मास्टर लेवल के जो हमारे फिजिशियंस हैं एज गुड एज एनी वर्ल्ड क्लास पेन फिजिशियन हम तैयार करें। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में शरीक बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स ने भी कॉन्फ्रेंस को इंतहाई मुफीद करार दे दिया और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। Well, thank you so much for this invitation to visit Pakistan, an amazing country. This conference has been fascinating. I'm so pleased to see this level of interest and the terribly important message that's being promoted here, that pain is an important specialty. It's a specialty in and of itself, that it's not limited to just anesthesia, but rather incorporates all sorts of specialties, that it's a multidisciplinary approach, but gives us the opportunity to provide patients in pain with hope and health and relief from that debilitating type of pain. So the education that doctors are getting here today, I think, is world class. It's my second time in Pakistan. I was in Karachi 2 years ago, and I love the people and I love the culture and I love everybody. That's why I'm back. I think your initiative is absolutely remarkable because there's not many countries that are putting their efforts together to treat chronic pain, which is an epidemic worldwide at this point. And Pakistan is it's a developed country that faces the same problems like any other countries. 40+% of the population has pain, and you're a step ahead of many other countries in the region for sure. I think मैं ये कहूँगी कि मैं आज बहुत प्राउड हूँ. It's a great achievement for me because 2014 में मुझे कांटेक्ट किया गया था यहाँ के जो पेन फिजिशियंस हैं जो पहली कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे. उस वक़्त का ये बेबी प्रोडक्ट है जो आज पूरा फ्रूटफुल हो रहा है. So it's a great moment of proud for me. Many teachers around the world comes here and many experts from the Pakistan participate, and I invite you to come to this conference and learn from the experts, and thank you for inviting me to this conference. आज की कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पेन मेडिसिन ट्रीटमेंट और जदीद तरीका इलाज से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से कहीं कम नहीं. सेहत से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचाते हुए कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ उमैर मलिक, हेल्थ न्यूज़, लाहौर.